कुशलता ही कह सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं, ये कोई जादू वगैरह नहीं है। नहीं बिल्कुल सर, ये कुशलता तो है ही, साथ में किसी भी मूर्ति को बनाने में अपने भाव भी बहुत जरूरी होते हैं कि आप किस भाव से उस मूर्ति को बना रहे हैं। जी, तो थैंक आपके यू। भाव अगर किसी मूर्ति को बनाने में स्वच्छंद है या फिर आप बहुत अच्छे भाव से उस मूर्ति को उकेर रहे हैं, बना रहे हैं, तो उसी तरह के भाव उस मूर्ति के अंदर हमको प्रदर्शित होते दिखाई देते हैं। जी, सही बात है, सही बात ऐसा है। मेरा मानना है सर। जी जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर। So now we'll start our today's session. Humbly welcome to all the participants, those who are at here. And now we'll start our today's session. So please take your pen and notebook so that you can take the notes. Just a minute. Okay. So our today's session is about architectural heritage of India, Thanjavur. You can see here, this is the right side, the Kanchipuram, Thanjavur, Madurai, which is the most famous places of Chola and Panda dynasty. And left side you can see the great king who built the Thanjavur temple. So can you say the name of this king? Can you say the name of this king? If yes, then Raj first, sir. yes, Raj Chola first. Okay. So here you can see the Chola dynasty from 301 BC to 1279 AD, and we can divide this in Sangam Cholas, then the Chola emperors, then the you can see here the Rajaraja Chola first, who is considered the greatest of all Cholas, expanded the Chola Empire overseas to Sri Lanka. Then Rajendra Chola first, he is also a great person, expanded the Chola Empire overseas. So then Rajadhiraj Chola and up to the Rajendra Chola third. So now we move towards this great temples. This temple, the Thanjavur temple, which is called as the Brihadeshwar temple. So this temple is the first building fully built by Rajaraj Chola first and was designed by Kunjara Mallan Raja Rama Perunthan. So please write this name, the temple designer. Okay. So with using granite and finished within 5 years. Somewhere it's mentioned as the 5 years, somewhere it's mentioned as 7 years, somewhere it's mentioned as 9 years. The solid base of the temple rises about 5 meters, above which stone deities and representatives of Shiva dance. The huge Kalasham or Vimanam, top portion of the shrine, is believed to weigh 81.28 tons of single stone block and was raised to its present height by dragging on an inclined plane of 6.44 kilometer. The big Nandi, weighing about 20 tons, is made up of a single stone and is about 2 meter in height, 6 meter length, and 2.5 meter in width. So the presiding deity of Lingam is 3.7 meter tall. The Nandi is the second largest Nandi, and the first one is Lipakshi Temple Nandi. Okay, so we already took the information about Lipakshi. So that one is the first, and this is the second one. The outer wall of the upper story is carved with 81 dance karanas, portions of Bharatnatyam, the classical dance of Tamilnadu. The shrine of goddess was added by Pandyas during the 13th century. Subramanyam Swami shrine by Vijayanagara rulers and the Vinayaka shrine was renovated by Maratha rulers. So we will study here Thanjavur architecture. So we will study about all these period. Okay, the Chola period, Vijayanagara and the Maratha too. Now we see this temple complex. So this entire complex, which is on the banks of Kaveri river, that was channelized to make a moat around the complex outer walls. The walls being built like a fortress. Yes, it looks completely like a fortress or a fort. The complex is made up of many structures that are aligned axially, and the complex can be entered either on one axis through a 5-story gopuram or with a second access directly to the huge main quadrangle through a smaller freestanding gopuram. The massive size of the main Vimanam Shikhara is 60-meter high with a 16 elaborately articulate stories and dominates the main quadrangle.
Pilaster, piers, and attached columns are placed rhythmically, covering every surface of the Vimana. The Gopuram of the main entrance is 30-meter high and smaller than the Vimana. So it is unusual in the Dravidian architecture, where the Gopurams are generally the main towers and taller than the Vimana. So here again about the main temple. The first paragraph we already took the information. Just only we need to see this called as the Karuvarai, a Tamil word meaning the interior of the sanctum. Sanctum is the innermost sanctum and the focus of the temple, where an image of the primary deity Shiva resides. So inside is a huge stone linga. The word Kuru Varai means Om chamber from Tamil. Garbha Griha. Okay. So from Tamil word Karu for footage, only priests are allowed to enter the innermost chamber. In the Dravidian style, the Kuru Varai takes the form of a miniature Vimana with other features exclusive to southern Indian temple architecture, such as the inner wall together with the outer wall, creating a pradakshina around the Garbhagriha for circumambulation, pradakshina. The entrance is highly decorated. The inside chamber housing the image of the god is the sanctum sanctum, the Garbhagriha. So here, this temple's Garbhagriha is a square and sites on a plinth. It's a location calculated to be a point of total equilibrium and harmony as its representative of a microsome of the universe, microcosm. जब आप फोटोग्राफ देखेंगे तब आपको ये सारी बातें ठीक से समझ में आएगी. यहाँ पर आपको सिर्फ पॉइंट नोट करना है. In the center is placed the image of the deity. The royal bathing hall where Rajaraja the Great gave gift is to the east of the hall, Irumadi Soran. The circumambulation went around the massive lingam in the Garbhagriha and repeated in an upper story. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गर्भगृह के बाजू में जैसे प्रदक्षिणा पथ है, वैसे आप फर्स्ट फ्लोर पर जाएंगे तो इनर साइड से प्रदक्षिणा पथ है, सेकंड फ्लोर पर जाएंगे तो आउटर साइड से प्रदक्षिणा पथ है, presenting the idea that Chola Empire freely offered access to the gods. So the inner mandapa leads out to a rectangular mandapa. So after the Garbhagriha, there is an Antarana portion and then the Ardha Mandapa, then the Maha Mandapa. And this is an rectangular mandapa, and then to a 20-columned porch with 3 staircases leading down. Sharing the same stone plinth is a small open mandapa dedicated to Nandi, Shiva's sacred bull mount. So after the this main mandapa, which is called as the Maha Mandapa too, then there is a Mukha Mandapa, and after that you can see there is an Nandi Mandapa too. So here there is an 3 entrances. One is the main Mukha Mandapa entrance door, another is the entry door for the Maha Mandapa, and third entry door for the Garbhagriha, for the Antarana portion. Here adjoining structures are also 2. Surrounding the main temple are 2 walled enclosures. The outer wall is high, defining the temple complex area. Here is the massive gopuram or gateway mentioned above. Within this portico, a barrel vaulted gopuram with over 400 pillars is enclosed by a high wall interpressed with huge gopurams actually lined up to the main temple. What are the features here? Another widely held belief is that the shadow of the gopuram, कुछ कई बार जाते हैं ना तो मंदिरों में क्या आश्चर्यजनक क्या बात है, जैसे विजय विठल टेम्पल हम्पी विजिट करते हैं तो वहां का म्यूजिक पिलर्स वो इंटरेस्टिंग है. विरूपाक्षा टेम्पल हम्पी पिनहोल कैमरा सिस्टम की बात करते हैं. So like that, what's the main interesting features over here? The shadow of the gopuram, this pyramidal tower, usually over the gateway of a temple, never falls on the ground. This is one interesting thing. The temple is said to be made up of about 60,000 tons of sandstone and granite. And the kumbham itself a 60-ton granite stone carved in one piece. अभी यहाँ पर अलग-अलग scholars के अलग-अलग opinions दिए गए हैं. On the top of main gopuram is believed to have been taken to the top by creating वो अभी जो हमने बात की. यहाँ पर फिर the prevailing beliefs that a mud slope which starts at about 3 miles from the temple site from Tirukoil, birthplace of Rajaraja's mother, near Sri Virateshwara Swami temple, portrays the figure of the Thanjavur temple. Elephants might have been used to drag the stone up the slope. This was claimed to be the only part of the gopuram
which does not cast a shadow that fall on the ground, at least not within the temple premises, which is an architectural amazement in the world of architecture. तो इसका मतलब ये आप समझ लीजिए कि जब ये मंदिर बनाया गया तो पूरा पहले जो है नीचे यानी जैसे हम कहेंगे कि स्टोन एक के ऊपर एक रखते हुए ये बनाए, मगर टॉप कलश जब बिठाने का वक्त आ गया तो उस समय पूरा मंदिर एक मड से जो है उसको पूरी तरह से ढक दिया गया बाहर आउटर साइड। फिर उसके बाद जो है लॉन्ग डिस्टेंस से जैसे हमारा कोई फ्लाईओवर ब्रिज बनता है उस तरह से एक फ्लाईओवर की तरह मट्टी का ये बनाया गया और हाथी जो है वो कलश जो है टॉप उसको जो है वो खींचते हुए लेके गए और फिर जाकर के ऊपर फिट किया गया, ऐसा माना जाता है। So Brihadeshwara temple at Thanjavur, that is a real great treasure house of the art early Chola painter. Here some more features. A painting believed to be that Marco Polo is in the... Any problem? हम लोग साउंड ऑन रखते हैं ना, इसलिए ये दिक्कत होता है। ओके, क्वेश्चन आंसर सेशन के समय में हम अब साउंड ऑन करेंगे। ओके, सो Marco Polo is in the Rajaraja temple, Brihadeshwara temple at Thanjavur. This is a famous painting here. Another few more paintings also. The contemporary classic describe the glory of the painting in the south by referring to the Chitra Mandapas, Chitrashalas in temples and palaces. Another thing is this Yoga Dakshinamurti painting. Then Gajal Lakshmi's famous temple painting is over here, and hundreds of such beautiful paintings are there in the mandapams of the temple. Rajaraja first appointed 400 dancing girls and several musicians in this Brihadeshwara temple at that time. And yes, we can see the dancing sculptures and the dance paintings also there in the temple. And till today, if you visit this temple, then you can see that there this dance tradition is continued. भरतनाट्यम जैसे जो डांस प्रोग्राम्स वगैरह जो है आज भी वहां पर कंटिन्यू ये प्रोग्राम चलते रहते हैं। एंड इट्स नॉट ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम्स, मैं ये हमेशा कहता हूँ जो लोग अपनी सेवा देना चाहते हैं ऐसे लोगों के प्रोग्राम वहां पर बहुत ज्यादा होते हैं। The temples in Chola period, apart from religious activity, were also centers of development of arts and crafts. See, the temples at that time, they are the centers of development of arts and crafts. So a temple means not only a temple, it's a school, it's a market, it's a practice laboratories like that. So many stone cutters, weaver, potters, oil makers, bronze workers lived in temple complexes. Temple become centers of exchange of commodities. Temples also collected taxes from craftsmen, traders and peasants. But these taxes means उनके ऊपर अन्याय और जुल्म करके ऐसा नहीं है, बल्कि जो कन्वीनियंट होगा, अफोर्डेबल होगा उस तरह से। टेम्पल रिसीव्ड लैंड डोनेशंस फ्रॉम किंग्स एंड ऑफरिंग्स फ्रॉम रिलीजियस फॉलोअर्स। आप देखते हैं कि आज भी इन मंदिरों को हजारों एकड़ जमीन जो है वो दान में मिली हुई है, तथा करोड़ों लोग, लाखों करोड़ों लोग जो है वो वहां पर अपनी संपत्ति अर्पण करते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण अभी जो बताए कि इट्स अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी, इट्स नॉट ओनली अ टेम्पल। वहां सिर्फ वर्शिप होता है इतनी ही बात नहीं है, उससे जुड़ी हुई कितनी तो भी ऐसी सैकड़ों बातें हैं जिसकी वजह से ये श्रद्धा और ये एक्टिविटी है। आप यहाँ पर जो है बृहदेश्वर टेम्पल का पूरा कॉम्प्लेक्स देख सकते हैं। इफ यू जस्ट काउंट द नंबर फ्रॉम हियर, दिस इज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, देन यू कैन सी this door which was built by Maratha, built in Maratha period. Then this is the first gopuram, this is the second gopuram, entry door and the gopuram. Then here you can see this is the first one, fourth number, this is the Nandi Mandapam. Before of that there is a Dhwajastambham is also there. Then number 5, you can see over here, this is the Varahi shrine. Then 6th number is there, this is South Choleshwaram Mandapam, south side Mandapam is here, and here is the north side Mandapam. This is the 13th number. Then you can see the 7th number over here. This is the Mandapam Brihadeshwara temple, and it's a Mandapam.
And then 8th number, which is an interpretation center, this left side, this is the new one. And the 9th one, which is the Ganesha temple. Then the 10th one is here. This is the Kuruvayur Devara shrine. Then the 11th one, which is the Subramanyam shrine, the Subramanyam Swami temple. Then the 12th one here, this is the Chandikeshwara shrine. Who is the Chandikeshwara? He is the one Alwar saint, Vaishnava saint at that time, and he was very famous. And then this is the North Choleshwaram Mandapam, 13th number over. Sorry, here it's here. Then 14th number here it is. This is the Amar shrine, and the 15th one. This is the Nataraja Mandapam. Okay, so the stars, you can see here the stars. First one, then second one, third one, so fourth one. These are the emergency exits. So please remember this, because as you entered in the entered from this Gopuram, then from your left side or the right side, if you remember these numbers and then this the mandapams, then you will easily note your you will clearly write down your notes. Okay, please remember here, 6th one, this is the south mandapam, 13th one, this is the north mandapam, and the temples over here. This is the 9th number Ganesh temple. कुछ बातें याद रखने के लिए, 12 नंबर जो है वो चंडिकेश्वर टेम्पल है, और ये 11th नंबर जो है वो सुब्रमण्यम स्वामी टेम्पल है. इतनी बातें अगर आप याद रखेंगे तो आप किस दिशा में हैं समझ में आएगा. ओके, साउथ एंड नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, ये सब समझने के लिए. ओके, देन हियर वी कैन सी नाउ, दिस इज द फोटोग्राफ. ये प्लान आपने देखा. ओके, now this is the photograph. You can see over here, this is the Maratha period arch or the door, and then these are the two gopurams over here. Now you can see this wall, compound wall. This is the outside compound wall, and this is the inside compound wall. So which is called as the like as a fortress. Okay, and then inside here you can see this is the Nandi Mandapam, the Mukha Mandapam, Maina Mandapam. This is the Vimana, Vimana, and then this entire portion. Then here the right side you can see the Subramanyam Swami temple. Here this small one, which is called as the Chandikeshwara temple, and the Ganesha temple over here. This is the south side mandapam and the north side mandapam. Now we can see again the close views. अब आप यहाँ पर ज्यादा और क्लियर देख सकते हैं. This is the barrel-loaded superstructure here. Then again here these temples are there. अभी ज्यादा क्लियर आपको दिखाई देता होगा, फिर बार बार रिपीट करने की नाम की आवश्यकता नहीं है. ये और कुछ फोटोग्राफ ज्यादा दूर से एरियल व्यू लिया हुआ. You can see the bastions over here also. So this is one beautiful photograph. Then अभी ये थोड़ा बैक साइड से लिया हुआ फोटोग्राफ है, यानी आप देख सकते हैं इधर विमाना पोर्शन है और इधर से ये फोटोग्राफ लिया गया है. So दोनों तरफ से आपको क्लियर दिखाई दे, इसका मकसद है. Now this is the first Gopuram, Kerala Kantan Gopuram and Rajarajan Tiruvasal. So अभी आपको डिसाइड करना है, आपको ये देखना है कि कौन सा गोपुर और कौन सा विमाना है. ओके, आप समझ में आ गया होगा शायद आपके, जो टेम्पल का कंपाउंड वॉल का एंट्री डोर होता है वहां से गोपुरम होता है. ओके, सो विमाना जो मुख्य मंदिर होता है वहां विमाना होता है, और उसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है जिसको हम शिखर कहते हैं. ओके, नाउ this is the gopuram with the walls, and see the Dwarapala devatas over here again, and here this is the upper portion of the gopuram. See the statues is same as this Stucco's art, and here now you can see these beautiful statues over here. And again here the construction style, here you can see the Ganesha and other devatas too. जो समझ में आते हैं, जितने आते हैं उतने तो लिखना है. This barrel-loaded superstructure which looks as a stupa architecture. Then here you can see the Vahana Tala Devata. Okay, so ये Tala Devata जिसको हम कहेंगे Tala Vahana, sorry, it's the Tala Vahana. Then here you can see this only main shrine part. So ये सिर्फ मुख्य मंदिर जो है. Now here you can see these are the Sopana Margika. This is the Mukha Mandapam. This is the Mahamandapa,
and then here is the Ardha Mandapa, Antrala portion over here, and then the main shrine inside this, and then this Vimana, sorry, this is the main shrine and the tower Shikhara portion, and then the Amlaka portion. Okay. अभी यहाँ पर अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो क्लियर हो सकता है। अभी यहाँ पर आपको जो है मैंने जैसे कहा था, दिस इज द साउथ साइड एंड दिस इज द नॉर्थ साइड, ये इतना पक्का याद रखना है, इसको नहीं भूलना है। ओके, देन अभी और नजदीक क्लोजअप से जो देख सकते हैं, जैसे जैसे नजदीक चलेंगे उतना ज्यादा क्लियर दिखाई देगा। नाउ हियर यू कैन सी दिस एंटायर पोर्शन, मुख्य मंदिर का ये मुख्य मंडप जो है वहां से लेकर के आप ये देख सकते हैं। नाउ हियर यू कैन सी देयर आर दी मुख्य मंडप में भी प्रवेश के लिए अलग अलग मार्ग है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी जो है यानी अंतराला पोर्शन जो है उसमें एंट्री के लिए डोर है, उसके साथ साथ गर्भगृह में प्रवेश के लिए भी यहाँ से मार्ग रखा हुआ है। देन हियर यू कैन सी दिस इज द अगेन Vimana, then Garbhagriha portion, then the columns, central plaza, which called as the this side, and then the mandapa. Okay, then यहाँ पर आप ये गर्भगृह जो है उसका प्रदक्षिणा पथ देख सकते हैं, और यहाँ का पोर्शन अगर आप ठीक से देखेंगे तो इसके ऊपर भी प्रदक्षिणा यानी आप घूम सकते हैं, ऐसा रास्ता दिखाई देता है। यहाँ भी आप देख सकते हैं। अभी आपको ये देखने के बाद समझ में आता है कि इसका लोड बेरिंग कैसे हुआ होगा। इतना बड़ा ये है, दिस एंटायर टेम्पल जो है 1,30,000 टन ग्रेनाइट स्टोन है पूरा, तो इतना ज्यादा हेवी वेट कैसे इसके ऊपर ये किया होगा आप यहाँ देख सकते हैं। सी ओवर हियर द लोड, ये कहाँ पर जा रहा है आपको ये दिखाई देता है, यहाँ का लोड जो है कहाँ पर स्प्रेड हो रहा है ये भी दिखाई देता है। देन यू कैन सी ओवर हियर, अभी यहाँ पर जो है आपको ये इसमें और ज्यादा क्लियर दिखाई देता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, हियर देयर आर नॉट 8 शिवा डांसिंग फिगर्स आर देयर। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड पहला और दूसरा मंजिल जो है दिखाई देता है, और ये ऊपर का पोर्शन है। अभी यहाँ पर जो है आप ये पूरा डिटेल में देख सकते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ विमाना, द स्क्वायर वर्टिकल बेस, tall tapering body, and this domicile funnel, square of 82 rising to height of 50, and then square feet. The square vertical base rises for 2 stories to accommodate the linga, which was increased in it, and an upper gallery was hence added, creating a second story with the second levels of the tower receiving the same treatment. So pyramidal portion, which we can see over here and right here too. So 30 dimension stories until the width of the apex is 1/3 base, and on the square platform stands the cupola, the inward curve of the neck breaking the ridged outlines of the composition. Then here you can see this view from the Nandi Mandapa. Okay, this portion from the Nandi Mandapa. Then again here you can see this Nandi Mandapa, which is exactly there are the 12 pillars are there, और यहाँ पर आप इसके ऊपर पिलर्स के ऊपर भी जो डिजाइन है, दिस इज कंप्लीटली ओपन मंडपा, एंड देन फ्रॉम क्लोज अप यू कैन सी हियर, एक्चुअली हियर इज अ स्मॉल, ये तो बाद में मराठा पीरियड में शायद बैठाया गया होगा, बट दिस इज द ओरिजिनल वन, एंड यू कैन सी ओवर हियर द ब्यूटीफुल पेंटिंग्स आर देयर, and on the pillars also you can see this beautiful motifs. Here is the lion, then the human figures over here, and again the lions here. So it means that the pillar designs are also too beautiful for the Nandi Mandapa and in the temple premises, in the Mandapa too. अब यहाँ पर भी नंदी का आप ये beautiful view देख सकते हैं और ऊपर paintings देख सकते हैं. Now here from the back side of the Nandi you can see this entire portion, and then inside of this Nandi Mandapa आप ऊपर अगर देखेंगे तो ब्यूटीफुल पेंटिंग्स इस तरह से दिखाई देते हैं। ये नंदी मंडपम में भी और यहाँ के मंदिर के जो आजू बाजू में जो मंडप है उसमें भी बहुत सुंदर इस तरह के पेंटिंग्स दिखाई देते हैं। Now this is the ध्वजस्तंभा, and then here the Vimana of the main sanctum, and you can see from the left side of the Nandi Mandapam and right side of the Nandi Mandapam. ऊपर चलते चलते किस तरह से ये पोर्शन ये होता है, रेज किस तरह से होता है वो दिखाने का यहाँ प्रयास किया है।
here again you can see this thing. And inside, when you entered in the main temple, then you can see the pillars and the designs, the paintings, and the main sanctum and other sculptures over here. Then when you came outside from back side, you can see this view, and here you can see the steps, and see this all portion upper of this basement. When you see this portion of the जगती, यहाँ पर कई बार कंफ्यूज होता है क्योंकि कई बार बेसमेंट को ही जगती ऐसा लिखा गया है. सो द्राविडाइन टेम्पल आर्किटेक्चर एंड नॉर्थर्न टेम्पल आर्किटेक्चर, उसमें ये बात हमको ठीक से समझना है. And on this portion you can see there are complete inscriptions over here, and here are the Devakoshthas, then the Kapota part, and this is the Parinala, and here you can see the beautiful all these statues over here, and this portion. Then here you can see again this is the another entry for the temple. So sometimes it's only one entry, sometimes two entries, sometimes three entries over here. Now many times confusion over here. Sometimes scholars use this Vimana as a Thanjavur temple Vimana, but this is the Gangai Konda Choleshwaram temple Vimana, which was built by Rajraj Chola's son, Rajendra Chola, and this is the Thanjavur temple's Vimanam. Okay, now you can see here this base Adhisthana, and then the upper side portion. This is the BP wall. This is the first, second, and then upside portion of the tower. Okay, so then you can see here this is the Subramaniam Swami temple there. Then this is the close-up view of the Subramaniam Swami temple. Now here you can see the Ardhastambha and all these statues, and this is the tower portion with the beautiful sculptures over here up to the last one. This is the Hara portion and the Tala portion. You can see over here also there are the beautiful statues. Okay, then you can see again this is the next photograph, and this is the this Chandesyara temple. Here also you can see this Chandesyara temple view. Here again this is the same temple. This is the Ganesh temple. Then मैं अगर गलत हूं तो कृपया कोई बताइए, जिन्होंने टेम्पल को अगर विजिट किया है, अगर कुछ गलत है तो कृपया आप मुझे बता दीजिए. दिस पोर्शन विच वाज बिल्ट बाय सरफोजी राजे भोसले इन मराठा पीरियड, वो एक शिव भक्त थे, इसलिए उन्होंने, ऐसा माना जाता है कि ये सारे शिवलिंग जो है उन्होंने यहाँ पर स्थापित किए. एंड एट द राइट साइड यू कैन सी इन द मंडपा देयर आर द ब्यूटीफुल पेंटिंग्स विद दिस शिवलिंगा. ओके, नाउ हियर यू कैन सी दिस इज द शिव पार्वती पाणी ग्रहण विधि. उस समय का ये विवाह का जो है उसका पेंटिंग यहाँ पर दिखाई देता है. Here you can see so many such beautiful paintings over here. Here Indra worshipped Shiva, and here again the Gaja, and then here again what I want to say, see here again this is the small temple architectures. अलग अलग छोटे छोटे मंदिरों के टेम्पल आर्किटेक्चर यहाँ पेंटिंग्स के इसमें भी हमें दिखाई देते हैं. This is one of the most famous painting from this temple, गजलक्ष्मी. Actually इस तरह के सैकड़ों पेंटिंग्स हमारे पास फोटोग्राफ अवेलेबल है. Here also you can see the beautiful all these musical instruments over here. Then this is the most famous Shiva as a yoga दक्षिणा मूर्ति. अभी ये एक इंटरेस्टिंग थिंग है, इसके बारे में डिटेल्ड वर्णन जो है हमारा और एक सेशन जो हुआ था उसमें किए है, तो उसमें वो वीडियो रिकॉर्ड शेयर करेंगे आपके साथ, आप उसमें के बारे में ज्यादा जानकारी ले सकेंगे. This is the mural of Rajaraja first and his guru. Okay, then this is the Kalpavriksha mythology of Kama depiction, and you can see such type of beautiful sculptures over there. This is the Narsimha. This is an interesting and rare one, क्योंकि मांडी पर लेकर बैठ के जो है उसका वध करते हुए देखते हैं. But this is an unique one, we can say that Narsimha. Then here लेफ्ट साइड यू कैन सी द ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर. कोई बता सकता है ये किसका है? ये किसका है, कोई बता सकता है? इसके पहले हमने ऐसे शिल्पों की जानकारी ली है. एनीवन? एनीवन? यस प्लीज. ये किसका शिल्प है, कोई बता सकता है? कैन यू सी क्लियरली? ये आपको दिख रहा है प्रॉपर? मेरी आवाज आ रही है आपको?
Yes, sir. Okay, can anyone say about this? This is the Ardha Ardha Ardhanarishwar. Ardhanarinatheshwara. Yes, very true. Thank you. Thank you. So here right side there is a Ganesha, and then you can see again here. Can you say about this? ये किसका शिल्प है, कोई बता सकता है? Anyone try? क्योंकि इसके पहले आइकोनोग्राफी के बुक्स शेयर किए हैं, मुझे ऐसा लगता है आप में से किसी ने पढ़े होंगे। ये किसका शिल्प हो सकता है, कोई बता सकता है? यस प्लीज, यस बताइए, जिन्होंने हैंड रेज किए हैं या जो भी जिनको पता है बोल सकते हैं। ट्राई, प्रयास करें। नोवन, सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड ट्राई टू फाइंड आउट। ओके, प्रयास कीजिए, कोई अगर प्रयास नहीं करेगा तो ऐसे भी नहीं चलेगा। Sir, they are saying they are mute. They can't unmute themselves. Oh, okay, okay. Sorry. So, okay, get it. You can write in chat box. Afterwards, I will unmute. Okay, to all. Then here you can see the sculptures depicting the various karanas and such type of excellent poses over there of the dancings. Here there is a numbering also, 52, 53, 54 like that. And here again you can see the temple walls have numerous inscriptions in Tamil and Grantha scripts. The temple complex has 64 inscriptions of Raja Chola first, 29 inscriptions of Rajendra Chola first, one each of Vikrama Chola and Kulotunga first, and Rajendra Chola second. So you can see such type of no any inscriptions here in Maharashtra, Karnataka, or Telangana part. In Karnataka, in few temples you can see, but on a single or two walls. But here, everywhere you can see such type of the beautiful and so long inscriptions over there. So this temple, which called as the Great Living Chola Temples, and the first one is Brideshwara Temple at Thanjavur. Why it's called as the Great Living Temple? This is a question mark. Please note down in your notebook. Why it's called as the Living Temple, Great Living Chola Temple. So what is the meaning of the Living Temple? Okay, Living. Maybe my pronunciation is wrong, but why it's called as the Living Temple? क्वेश्चन मार्क लिखिए, फॉर द स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली, नॉट फॉर द स्कॉलर्स। क्यों इसको ऐसा कहना है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉन्यूमेंट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ लिविंग टेंपल? ओके, सो ये आपको फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स को। सो फर्स्ट वन इज द बृहदेश्वरा टेंपल एट तंजावुर, द टेंपल ऑफ गंगाई कोंडा चोलापुरम, द ऐरावतेश्वरा टेंपल एट धारासुरम, विजयालय चोलेश्वरम, अय्यकुडी बालसुब्रमण्य स्वामी टेंपल, नागेश्वर स्वामी टेंपल, Moorcoil, and a Korangatana temple. Same as Hampi temple is also called as the Living Chola temple. Okay. So what are the main parts of this temple? The plan of temple consists Garbhagriha, Ardhamandapa, Mahamandapa, and the Stapana Mahamandapa and Vadya Mandapa. Okay. So what is the meaning of this last three one? यहाँ पर आपको जो है ये तीनों को मिलकर के भी कई जगह पर सिर्फ महामंडप इतना ही वर्ड यूज किया गया है, और इट्स जस्ट यूज एज द मंडपम, एंड समटाइम्स दिस इज आल्सो द प्रॉब्लम अर्ध मंडपम। बट प्लीज बी क्लियर, गर्भगृह के बाद अंतराल होता है, अंतराल के बाद जो है अर्ध मंडप होता है, समटाइम्स अंतराला एंड समटाइम्स डायरेक्टली द मंडपा। सो ये भी एक कंफ्यूजन होता है, और कई बार ऐसा होता है कि अर्ध मंडपम लास्ट में, जो हम मुख्य मंडप कहते हैं, वहां अर्ध मंडप वर्ड लिखा होता है। सो सिर्फ पोर्शन जो है उसको समझिए, नाम थोड़ा बहुत कहीं पर कुछ यूज किया है, कहीं पर कुछ यूज किया है, एंड समटाइम्स महामंडपम एंड आफ्टर दैट वाद्य मंडपम और दिस ऑल, ये क्या है सभी, तो जहां पर संगीत और इसके प्रोग्राम्स अगर हो तो ये नृत्य मंडपम, भोग मंडपम, लाइक दैट। ओके, सो भोग मंडपम मीन्स व्हाट? ईश्वर को अर्पण करने के लिए जो कुछ भी लाया जाता है, जो वहां रखा जाता है, इट्स कॉल्ड एज द भोग मंडपम। देन द सैंक्टम 20 meters square, housing the unique and extraordinary lingam, the main shikhar known as the Sri Vimana. Okay, अभी हमने उसके फोटोग्राफ देखे, is about 66 meter high and has 14 stories. Here again, this is the confusion. Sometimes it's mentioned 16 stories, but see
दो मंजिल है, ओके, जैसे हमारे यहाँ पे बिल्डिंग के मंजिल होते हैं, सो वी कॉल इट्स अ फ्लोर्स, एंड देन अपसाइड पोर्शन जो है उसको काउंट किया गया है, समटाइम्स इंक्लूडिंग दैट टू इट्स 16 story, ओके. So it is decorated with niches and images of Shiva cult, a cupolic dome resting over this 25 feet square single block of granite. The base of dome is beautified by two nandis at each corners. In front of temple is a big nandi mandap. इसके बारे में भी हमने इसके पहले जानकारी ली और इसके बारे में भी देखा कि फर्स्ट जो है सबसे बड़ा वो लेपाक्षी टेम्पल में है. The circumambulatory corridor around the Ardha Mandapa contain fresco paintings discovered in early half of last century and display variety of secular themes. This World Heritage Monument, now here it's used the word monument, okay, it's for the entire complex, okay, established as world's tallest temple tower in which 130,000 tons of granite stone were used. The temple even survived 6 earthquakes, okay. So इतना बेस्ट कंस्ट्रक्शन, इतना हेवी कंस्ट्रक्शन होने के बावजूद भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन स्टाइल. जब आप किसी मंदिर को विजिट करते हैं तो आपको क्या देखना चाहिए? हमने शिव शंकर बाबूजी, इज अ ग्रेट आर्किटेक्चर मास्टर, जिन्होंने हमारे साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल ये कोर्स हमने लिया था 7 days का, और हमारा जो 1 year कोर्स चलता है उसमें भी उन्होंने लेक्चर दिए, तो उसमें से ही मैंने यहाँ पर ये लिया है, तो आप ये देख सकते हैं. एक्सप्लोरिंग आर्किटेक्चर इन अ टेम्पल, व्हेनेवर यू विजिट एनी टेम्पल ट्राई टू सी दीज ऑल थिंग्स. गोपुरम, जो गर्भगृह के ऊपर का जो जो एंट्री डोर होता है कंपाउंड वॉल, उसके ऊपर जो आप देखते हैं गोपुरम, एंड एट द गोपुरम यू कैन सी द टायर्स, कितना 4 मंजिला है, 5 मंजिला है, स्कल्पचर्स ऑफ लोकल पुराना, उसके ऊपर जो शिल्प दिए हुए हैं, एंड रिलेटेड स्टोरी. Then the courtyard, जिसमें तोरणा, बलिपीडम, ध्वजस्तंभा and vahana, and then mukha mandapa. But in the courtyard again you can see there the Nandi mandapam too also. Okay, so then mukha mandapa where the steps and balcony roof kapota. Okay, अंदर चढ़ने के जो जिसको हम सोपान मार्गिका कहते हैं, and the balcony roof kapota. Sometimes it's an sloping roof like that. Then the mahamandapa. Pillars, cornice, windows and roof ornamentation. In southern temple architecture style, these Mahamandapas entirely it's a flat roof, but in Nagara style, sometimes there will be there are some shikharas over on the Mahamandapa also in Nagara temple architecture style. In Mahamandapa, inside you watch these pillars, cornice, windows and roof ornamentation, the ceiling portion. Then in the Ardha Mandapa, the Dwarpalas and the lintel portions like the Gajalakshmi and the Navagraha. Then the main sanctum, the Garbhagraha, main deity, background sculptures and Pradakshina Patha. Then sanctum walls, Devakoshtas, Toranas, pilasters and sculptures. Okay, sanctum walls, especially from the outside. Okay, then tower portion, which is on the sanctum. Tires with the Karanas, Panjara, Bhadra segments. अब इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग ये वर्ड जो है ना, ये कई बार चेंज हो जाते हैं, तब भी कंफ्यूज हो जाते हैं. अभी हम देखेंगे और कुछ तब समझ में आएगा. शिखरा पोर्शन, शेप एंड डिजाइन, नागरा, वेसरा, द्रविड़ा, इसमें ये अलग अलग दिखाई देगा आपको. एंड सब स्टाइल जो है उसके, जैसे अगर मरु गुर्जर आर्किटेक्चर स्टाइल है या कलिंगा आर्किटेक्चर स्टाइल है, हेमाडपंथी टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल है, तो उसमें शिखर आपको अलग अलग दिखाई देंगे. थ्री आर द ओनली मेन, बट सब स्टाइल्स को अगर देखेंगे इट्स मोर देन 18, जो मुझे पता है, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं. सब स्टाइल्स हियर यू कैन सी अनदर टेम्पल्स इन द सेम कॉम्प्लेक्स, कॉमन लोकेशंस एंड डेटीज. So in a temple complex there may be 4, 5, 6 or up to 19 or sometimes 64 temples also there. So यहाँ पर जो है आप अभी जो टेम्पल तंजावुर टेम्पल जो हमने देखा उसके बारे में सिर्फ समझने का यहाँ थोड़ा सा प्रयास करेंगे. दिस इज द एंट्रेंस, सो दिस इज द सोपान मार्गिका एंड इट्स अ मुख मंडपम ओवर हियर विथ द एंट्रेंस, देन द मंडपा पोर्शन एंड महामंडपा एंड these all things. Then you can see over here the Garbhagriha and the Shikhara. Okay, so this from bottom to top it's called as the Vimana. Okay, so please remember this thing. And this is the tower portion. Okay, and this is the Shikhara portion.
देन ये हारा ताला ये सभी जो है ना, ये एक एक मंजिल को देखेंगे तब ये समझ में आएगा. देन दिस इज द आमलका. ओके, एंड दिस इज द कलशा. तो ये इसको समझना है. और इसमें भी कई बार ऐसा होता है कि कई शब्द चेंज हो जाते हैं, क्योंकि साउथर्न इसमें या द्रविड़ टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल में इसके नाम चेंज हो जाते हैं. जैसे अभी ये भित्ति है. ओके, सो समटाइम्स इट कॉल्ड एज द कुड़ी वॉल. ओके, प्रस्तरा. सो ये नाम चेंज होते हैं. कभी कभी हम ऐसा कर सकते हैं, आप नागर द्राविड़ और ऐसा और लिखिए. जैसे आपको अगर लगता है बंगाल आर्किटेक्चर है या ओरिसन आर्किटेक्चर स्टाइल है तो उसमें अलग नाम है, तो वैसे लिखिए. बेस अगर देखेंगे तो समटाइम्स इट्स सर्कुलर और इलिप्टिकल और यू कैन से जिसको हम अंडवर्तुलाकार कहते हैं. तो उसके बाद जो है स्क्वायर शेप है. ऐसे अलग अलग शेप्स आप देख सकते हैं. और फिर यहाँ पर उसी का, और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग वर्ड लिखा है, by manipulation of this basic grid that the Indian architect created the greatest temples. So this is the Vesra architecture style, which is the example of that, and it's a hybrid. Now here you can see that elements. Here now you can see this is called as the Jagati. Over here this is the Pitha, then the Adhisthana, then this is the Janga. Sometimes it's called as the Kudi or the wall. Then this is the Virandika, then a Karana, this portion. Okay, then the Urushanga, these parts, Urushanga, and then Amlaka. Here it is the Amlaka. Okay, but here it's here this portion before the Amlaka it's called as the Griva. Okay, and then this is the this one is the Kalasha. But if it's the portion like this, then it's called as the Stupi. Okay, here it's mentioned as the Stupi, final. And then Griva, neck, second tala. So this is the second tala, first tala, and this is the hara up to this portion. Now here you can see this is called here as the prastara. This is the pada, wall, and then adhisthana and the upapitha. अभी ये ओरिसाइन आर्किटेक्चर स्टाइल में देखेंगे तो और कुछ अलग नाम आपको दिखाई देंगे. सो कंफ्यूज नहीं होना है. जो दिखाई देता है, जो समझ में आता है, लिखिए. धीरे धीरे आप 1 2 3 4 5 10 बार 20 बार पढ़ेंगे और अलग अलग स्टाइल्स के टेम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे, तब आप जो है ये क्लियर होते जाएगा. एक टेबल बनाइए. इस टेबल में आपको लिखना है नागरा, द्रविड़ा एंड पोर्शन ऑफ द टेम्पल. जैसे लेफ्ट साइड में अगर आप लिखेंगे तो पहले आप बेस से शुरुआत कीजिए. जो हमारा जमीन है वहां से शुरुआत कीजिए. फिर जमीन के ऊपर जो प्लेटफॉर्म बनेगा उस प्लेटफॉर्म से शुरुआत कीजिए. फिर उसके ऊपर का जो पोर्शन है, यानी टेम्पल का फ्लोर जो रहेगा, अंदर का फ्लोर तक का पोर्शन जो है उसके बारे में लिखिए. देन फ्लोर का जो आउटसाइड वॉल है वहां से लेकर के फिर अपर पार्ट जो हम जिसको कलश कहते हैं वहां तक, ध्वजा तक जो भी है, तो आप लिख सकते हैं. सो नागर, द्रविड़, वेसर एंड अदर सब स्टाइल्स जो भी आपको समझ में आए उसमें आप लिखना है. आप एक्सेल सीट में बना सकते हैं. आप चाहे तो वर्ड फाइल में टेबल बना के लिख सकते हैं. पेपर पर भी आप व्हाइट पेपर पर टेबल जो है वो ड्रॉ करके उसमें भी लिख सकते हैं. इन तंजावुर, जस्ट बिसाइड दिस मेन टेम्पल, there is a Thanjavur Royal Palace Courtyard, and this is also very beautiful palace. So whenever you visit there, please visit this. And another interesting thing is that their own temple is also there, and one India's most famous library over there, which is called as Thanjavur Saraswati Mahal Library. Okay, so then this is an interesting another thing. मंदिर को विजिट करते हैं कहीं भी तो इस बात को मत भूलिएगा. जब तंजावुर पर्टिकुलरली कांचीपुरम वगैरह जाते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द कांचीपुरम इडली. एक्चुअली ये एक हमारा हाथ जितना है उतना लंबा है और बहुत टेस्टी और बहुत ही अच्छा है. मैं इसके बारे में जब सुना था तभी से इसके बारे में, यानी जब भी ये टेम्पल के बारे में हम बात करते हैं तो ये भूलना नहीं चाहिए. प्रसादम, जैसे तिरुपति जाते हैं तो लड्डू खाना नहीं भूलना है, वैसे यहाँ जाने के बाद भी वो भूलना नहीं है. बिकॉज these are the traditions. Okay, and we need to study these things. Tradition of नृत्य सेवा is also going on there. So आज भी ये नृत्य सेवा लोग दे रहे हैं. हमारे यहाँ पर हम कहते हैं, मैं महाराष्ट्र की बात करता हूँ, महाराष्ट्र में हम ये कहते हैं कि भवभूति जो है
अब भभूति के बारे में भी कई अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बातें लिख के रखी है। सो हमारे यहाँ मिराशी जो है उन्होंने या फिर बाकी लोगों ने जो लिखा है, some scholars mentioned that Bhagavati is from the Jhansi Kalpi, and some scholars mentioned in Nagpur Ramtek. But when I was there in Hyderabad, manuscripts and inscriptions ये सभी को देखने के बाद और जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकैवेशंस एंड द एविडेंसेस बाय डॉक्टर शोभना गोखले और ये सभी पढ़ने के बाद में हमारे यहाँ पर कालप्रिय नाथ के सामने भभूति अपना जो भी संगीत नाट्य होता था वो जाकर वो पहले पढ़ते थे, जब उन्हें ईश्वर का आशीर्वाद मिलता था। कैसे उसको कहते हैं हमारे यहाँ पर कि देवाचा कौल मिलने, कौल माने तो क्या, अगर समझ लीजिए फूल हाथ से गिर गया, आशीर्वाद के तौर पर जो भी साइन होंगे उसके, तो वो मिलने के बाद ही वो लोगों के सामने जाकर सेवा प्रस्तुत करेंगे। बट इसमें से सब में से क्या कहना है कि मैं श्रद्धा से कुछ जो है जो निर्माण किया हूं वो श्रद्धा है, वो अर्पित करना है, डेडिकेशन। तो वो आज भी यहाँ पर चल रहा है। जब जाकर अभी मैडम ने शुरुआत में कहा ना कि जो भी मूर्ति निर्माण करते हैं उसमें वो भाव होना चाहिए तभी वो दिखता है। सो इट मीन्स दैट जब आप नृत्य करते हैं, कोई भी काम करते हैं, आपकी आत्मा जब आप उसमें लगा देते हैं, आत्मा लगाने में तो डेडिकेट यूर हमारा शरीर का रोम रोम जो है उस कार्य में समर्पित हो जाता है। सो ये सेवाएं आज भी यहाँ दिखाई देती है। सो टिल टुडे द चांटिंग ऑफ द मंत्रास, जब हम बोलते हैं ना कि तिरुपति का स्तोत्र हो या देवी स्तोत्र हो जो बोलते हैं अय गिरि नंदिनी नंदित, तो वो उच्चारण जो होता है हमरिंग करता है हमारे माइंड में। उस तरह से ही नृत्य यहाँ के अगर देखते हैं फ्रॉम द कर्नाटका टू साउथर्न पार्ट, तो आप ये देख सकते हैं कि आज भी वो सेवा का भाव वहाँ है। प्रोफेशनलिज्म इज एन अपार्ट थिंग एंड द डेडिकेशन इज एन अपार्ट थिंग। ओके, नाउ फॉर द आर्किटेक्चरल साइट्स, इफ यू वांट टू स्टडी in Tamil Nadu, then particularly you can visit these all places: Kanchipuram, then Mamallapuram, Mahabalipuram, then this Gangai, Konda, Cholapuram, Kumbakonam, Dharasuram, Tiruvayur, Thanjavur, Trichy, Sitanvasalikeros, Madurai and Tiruvannamalai. So ये सभी इसलिए कि आर्किटेक्चरल स्टडी अगर करना है तो सिर्फ मैं अगर मेरे पास जो टेम्पल्स डाटा जो अवेलेबल है तो उसमें 93,693 टेम्पल्स का डाटाबेस हमारे पास अवेलेबल है, एंड इन दैट ओनली फ्रॉम तमिलनाडु देयर इज 44,121 टेम्पल्स का लिस्ट जो है वो अवेलेबल है। सो जस्ट आई वांट टू से हम्बली, इफ यू वांट टू स्टडी मोर देन प्लीज स्टडी दीज ऑल बुक्स। वर्ल्ड हेरिटेज सीरीज, द ग्रेट चोला टेम्पल्स, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पब्लिश्ड दिस, द मिडल चोला टेम्पल्स from 985 to 1070 by Balasubramaniam ji, then Rise of the Cholas by Jay Kumar, then Rajaraj Chola by Raghavan, then Development of Temple Architecture in South India by Anuradha ji and B.R. Mani ji forward this. B.R. Mani, who was the Director General of our this National Museum, and the right side you can see the Dr. Surinder Sai Pustak Temples of South India. The Chola temples, Thanjavur, Gangai, Konda, Cholapuram and Dharasuram by Shivram Murthy ji, and at the right side Thanjavur cultural history. Here some more references are at there. If you want to study seriously, then please take screenshot. You can find out. You can search these books and study it. So in last 7 days, we tried to study a little bit part of our great Indian heritage. So let us come together to preserve it, to study it, and to inculcate the 64 any type of these arts, beautiful arts in our next generations. And if any questions, any problems, you can take the screenshot of these two. There is my email ID, phone number, you can call me and ask. And at last, just I want to say humbly thanks a lot to all of you just to see this beautiful scene at the Purnima ki raat ka ये तंजावुर का व्यू है। ताजमहल के बारे में तो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या कहा था हम ये सुनते हैं, मगर आप भी कुछ लाइन अगर इसके बारे में लिख सकते हो तो 2 लाइनें लिखकर जरूर भेजिएगा। ये व्यू आपके सामने जो दिख रहा है पूनम की रात का चांद, और ये बाजू में हमारा एक सुंदर बृहदेश्वर टेम्पल। सो इट्स एन आर्किटेक्चरल वंडर। उसके बारे में अगर कुछ लिख सकते हैं तो जरूर लिख के भेजिएगा।
अगर कुछ सवाल है तो पूछे। मैं लास्ट में कुछ और बातें भी करना है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी यहाँ पर ही करता हूँ। इसके पहले कि हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू हो, उसके पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी से, जैसे मैंने चैट बॉक्स में लिखा था, प्लीज ऑन योर वीडियो, प्लीज ऑन योर वीडियो। जिनको भी पॉसिबल है कृपया आप अपना वीडियो ऑन करें। हम सभी का एक ग्रुप फोटो लेना है, इसलिए कृपया वीडियो ऑन करें। और जो किताबें आपको भेजी है, हर सेशन के बाद आपको किताबें जो भेजी है, साउंड ऑन नहीं करना है। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, प्लीज ऑन योर वीडियो ओनली। हर सेशन के बाद जो आपको किताबें भेजी है, कृपया वो पढ़िए। उसमें एक एक टेम्पल के बारे में भी बुक है, एक एक प्लेस के बारे में बुक्स है, टेम्पल आर्किटेक्चर्स के बारे में बुक्स है, पेंटिंग्स, आर्ट एंड आर्किटेक्चर टेक्नोलॉजीज उसके बारे में बुक्स है, आइकोनोग्राफी के बारे में बुक्स है। सो हम्बल रिक्वेस्ट इज दैट आई एम नॉट अ स्कॉलर, मैं कोई महान विद्वान नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा विद्यार्थी हूँ। जो मेरी समझ में आया वो आपके सामने रखने का प्रयास किया। मगर आप पढ़ेंगे तो और ज्यादा अच्छे से समझेंगे, और मुझे ऐसा लगता है सबके सामने और अच्छा आप रख पाएंगे। सो हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट प्लीज ऑन योर वीडियो। सभी लोग तैयार है? ओके, सो विल टेक अ ग्रुप फोटोग्राफ, प्लीज रेडी, एंड वी नीड योर $1,000,000 स्माइल। सो आपके चेहरे की हंसी हमारे लिए ज्यादा आवश्यक है, बिकॉज अगर आप खुश है तो, अगर आप दुखी है तो मुझे क्षमा करना। अगर कुछ समझ में नहीं आया ठीक से, मेरी कुछ गलती हो गई हो, मुझे क्षमा करें। मगर जैसे मैंने एक एग्जांपल दिए थे, राकेश साळुंखे जी का एग्जांपल मैंने आपको दिया था किताब के बारे में। जहां पर भी आप जाते हैं, आने वाली जनरेशंस को इसके बारे में आस्था निर्माण हो, उनके दिल में जो है हमारी इस हेरिटेज के बारे में आस्था निर्माण हो, इंटरेस्ट निर्माण हो, और वो कुछ अच्छा सीखे उससे। सिर्फ देखना काफी नहीं है, उसमें जो है हम खुद को डेडिकेट कर देना है। तो कृपया लिखना शुरू कीजिए, सोशल मीडिया में और जिसमें भी है पॉसिबली तो लिखिए। मैं कुछ नाम यहाँ पर जरूर बताना चाहूंगा जिन लोगों ने, प्राची जोशी जी, शरण्या के, कुंगनमती यस, दिव्या सैनी जी, प्रसन्ना कुमार जी, डॉक्टर अर्चना तिवारी, सुमित्रा श्रीवास्तव जी, स्वाति अग्रवाल जी, डॉक्टर आदित्य शर्मा जी, डॉक्टर राकेश डाबी जी, सौमन्या मुखर्जी जी, डॉक्टर शालुंके जी, ऐसे और कुछ लोग जिन्होंने अपने नोट्स बहुत अच्छी तरीके से लिखे और भेजे हैं। मैं, मनीषा जी भी, आपने भी भेजे हैं। और जिन लोगों ने अभी तक नहीं भेजे, कृपया, एंडिला बोस जी है, सबके नाम मैं नहीं पढ़ सकूंगा। जिन्होंने भेजे हैं बहुत अच्छा है, नहीं भेज पाए वो लोग कृपया भेजिए। और अब तक जो 7 डेज के बाद के इंक्लूडिंग टुडेज सेशन, उसका सबका एक पीडीएफ फाइल बनाकर भेजना है। जो अब तक भेजे हैं उसको भी इंक्लूड करके 7 डेज का आपको भेजना है, तभी जाकर के आपका वहां पर अटेंडेंस का ये होगा। नाउ अभी कृपया आपकी तरफ भी ग्रुप फोटो आप ले लीजिए, ताकि ऐसा ना हो मेरे पास ही मेरा फोटो कभी नहीं आता है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। हमारे इसमें वो प्रावधान तो नहीं। अभी यहाँ पर जो है, जो लोग अटेंडेंस हमारे पास होना है, सो देखिए आज 75 लोग हैं। रोज अगर इतने रहते तो कितनी खुशी होती। मगर मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि अगर किसी को कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। फर्स्ट द क्वेश्चंस, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट। अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, इफ एनी क्वेश्चन। हिमानी गांधी जी का नाम मैंने नहीं लिया, और भी कुछ लोग हैं जिनका नाम नहीं लिया गया। यस, स्वाति अग्रवाल जी, कुछ पूछना है? सर किसी को मुझे कुछ ये पूछना पूछना है है तो आप पूछ। कि क्या मैंने एक बुक में पढ़ा है कि ये जो गोपुरम होता है इसमें जो दोनों साइड सींग लगे होते हैं, उस वजह से ही इसको गोपुरम बोला जाता है। क्या ये सही है? कई समय ऐसा होता है कि गोपुरम जो है दोनों तरफ से खुला होता है। यानी जैसे अभी आपने देखा, ये दोनों गोपुरम जो थे तंजावर के, वो दोनों तरफ से खुले हैं, देख सकते हैं। और दूसरी जी जी बात सर। है कि विमान के ऊपर तक जाने के लिए पहले अलाउड था, अभी तो अलाउड नहीं है, मगर आफ्टर स्पेशल परमिशन यू कैन गो। मगर मुझे ऐसा कुछ पता नहीं कि ये दो तरफ से बंद रहता है इसीलिए इसको गोपुरम कहते हैं, ऐसा कोई डेफिनेशन मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है। हो सकता है अगर आपके पास कुछ रेफरेंसेस है तो प्लीज सेंड इट टू मी सो दैट आई कैन आल्सो ओके स्टडी। सर।
ओके सर। थैंक यू। एनी मोर क्वेश्चंस? किसी को और कुछ सवाल पूछना है? और दूसरी बात है कि किसी को अगर ऐसा लगता है आप जिस एरिया में रहते हैं वहां के मंदिरों के बारे में, वहां के किसी भी हेरिटेज साइट, आर्कियोलॉजी साइट्स या फिर एनी एनी टाइप ऑफ द हेरिटेज, वहां का कोई आर्ट है, इंडिजिनियस आर्ट्स है, कशीदाकारी हो सकती है या ब्रांच का कुछ बनाने का ये हो सकता है, एनी टाइप ऑफ द आर्ट, चित्रकारी हो सकती है, उसके बारे में अगर आप बात कर सकते हैं, 1 घंटे का रिकॉर्डिंग अगर आप कर सकते हैं तो आप हमें बताइए, ताकि हम हमारा जो एनुअल जो कोर्सेज चलते हैं, 1 ईयर डिप्लोमा कोर्सेज वगैरह जो चलते हैं, उसमें आपको इनवाइट कर सकते हैं और आप अपना जो लेक्चर है वहां पर दे सकते हैं। तो दिस इज एन हम्बल रिक्वेस्ट, if you want to give any lecture regarding any type of the arts and architecture or any type of the heritage, tangible or intangible heritage, then most welcome and please give a lecture for all, क्योंकि सभी बातें सभी को मालूम हो सके, यही हमारा प्रयास रहेगा। क्योंकि पॉसिबल नहीं है ना, मुझे तो आंध्र में, तेलंगाना में या फिर बंगाल में या जम्मू कश्मीर में किसी गांव में कोने में क्या हो रहा है ये तो मुझे पता नहीं हो सकता। अगर आप सभी, हम सभी मिलकर के जो है अपना नॉलेज एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। So once again, humbly thankful to all of you and please forgive me if any mistakes and if you want to थैंक यू speak सर। then please and you can सर speak. आपने हमें बहुत अच्छी तरह से अटेंड किया, बहुत अच्छी तरह से लेक्चर दिया आपने, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। Yes, thank you Kabir ji, thank you, thank you. सेम है सर, बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सर। Yes, thank you everyone. सर Thank you, आपको sir. मुझे बहुत सारे वर्धा के टेम्पलों बाद की मालूमात नहीं थी काफी सर, अच्छा लेकिन लगा आपकी सर वजह से पता चला मुझे। जी जी, थैंक यू, थैंक यू सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि हम अभी लोग सेवाश्रम के बाद आज पहली बार मिल रहे थे इस सेशन में, और वह जो एक्सपीरियंस था यहाँ पर काफी काम आया, जो वर्धा के बाद का जो एक्सपीरियंस था। सो आपको बहुत बहुत सर अभी धन्यवाद हमको सर, बहुत बहुत कुछ बहुत जानना थैंक यू। बाकी है सर। जी जी, सर बहुत सही बात है, अच्छा, क्योंकि बहुत देखिए अच्छा। एक छोटा सा कोर्स था, उसके सिलेबस के अनुसार हमने समझने का प्रयास किया। इट्स लिमिटेड बट नॉलेज शेयरिंग इज नॉट लिमिटेड। इसके लिए जैसे हम कहते हैं ना कि जितने भी सेशन हुए, यूट्यूब पर भी इंडियन हेरिटेज यूट्यूब चैनल है, उसमें हमने अब तक मैक्सिमम वीडियोस विद द परमिशन ऑफ द स्कॉलर्स हमने उसमें रखे हैं। यू कैन एंजॉय एट एनी टाइम एंड इफ एनी क्वेश्चंस देन यू कैन आस्क। ग्रुप में बने रहिए, क्योंकि हमारे सारे अभी तक जितने कोर्सेज हुए हैं सभी ग्रुप आज भी उसी तरह से है, और आप जो भी पूछना है कभी भी पूछ सकते हैं। इट्स नॉट लिमिटेड ओनली अप टू दिस कोर्स, एनी टाइम यू आस्क, यू कैन आस्क द क्वेश्चंस एंड द स्कॉलर्स विल आल्सो शेयर देयर व्यूज रिगार्डिंग दैट। सर अभी आपने जो पिक्चर दिखाई लास्ट में, जो चांद के साथ में बृहदीश्वर मंदिर की, जी। तो उस पे जस्ट मैंने अभी यहाँ सेशन के चलते ही मैंने लिखा है उसे 4 लाइनें, मैं सुना देती हूँ आपको। चांद भी दीदार को रुका है, सात आसमां भी झुका है, कहाँ से शुरू करूं और कहाँ मैं अंत, इतनी सुंदरता है बृहदीश्वर तेरी बिखरा है दिगंत। वाह क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत वेरी नाइस। सुंदर। देखिए वाह क्या बात, ये यही बात है कि हम लोग इस तरह से, हमारे आजू बाजू में ऐसी सुंदरता भरी पड़ी हुई है कुदरत में, और हमारे आजू बाजू के छोटे छोटे बच्चे, हमारे फैमिली, सभी के इसमें, मगर हम उस सुंदरता की तरफ देखना जो है भूल गए हैं। बस दिन रात परेशान है, ये टेंशन है, वो टेंशन है, बहुत कुछ ऐसी बातें हैं, छोटी छोटी बातों में ये सुंदरता है, खुशियां हैं। सो लेट अस एंजॉय दैट एंड बी हैप्पी। Be happy with yourself, be happy with your family and be happy with society. थैंक यू भुजंग जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत इंफॉर्मेटिव था, एंड द काइंड ऑफ बुक्स यू हैव शेयर्ड विद अस इज रियली कमेंडेबल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सर मनपूर्वक धन्यवाद। थैंक यू। मैं सिर्फ आपको आंकड़ा अगर बताना है तो मेरे पास यहाँ हाथ में एक नोटबुक मैंने रखा है, आप इसमें अगर देख सकते हैं तो लास्ट में आप देख सकते हैं अभी की तारीख में archives.org जैसी वेबसाइट पर लगभग 22 लाख किताबें अवेलेबल है। 22 लाख बुक्स आर अवेलेबल देयर एंड मैन्युस्क्रिप्ट की अगर बात करूं तो IGNC और हमारे सभी इसमें मिला करके 21,24,342 मैन्युस्क्रिप्ट डिजिटाइज्ड फॉर्मेट में अवेलेबल है। सो इसका मतलब हमारे पास नॉलेज का भंडार कम नहीं है। पॉसिबल नहीं है कि सभी के पास इस तरह से हार्ड कॉपी में बुक आ सकते हैं। ये एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर, हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन एंड इस्लामिक उसका है, और
ये इस तरह की एक एक वॉल्यूम जो है वो 5,000, 7,000, 10,000 में है। मगर अभी मैंने कहा कि नॉलेज का भंडार इंटरनेट की दुनिया ने हमें उपलब्ध कराया है। So we need to use such technologies for to get the knowledge or to share the knowledge. So यही बात है कि हम कैसे यूज करें, how to use these things. So अगर आप इन माध्यमों को यूज करके नई जनरेशन को अगर ये परिभाषा सिखाएंगे कि हम इस तरह से, हमें एक एक किताब ढूंढने के लिए बचपन में लाइब्रेरीज में जाना पड़ता, सिटी पब्लिक लाइब्रेरी, किसी कॉलेज की लाइब्रेरी में, मगर आज की तारीख में आप मांगिए, मैं तुरंत मेरे डाटाबेस में ढूंढ करके, अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ मगर उसी समय में जो है यहाँ पर हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क 4 टेराबाइट का हार्ड डिस्क है और इसमें 75,000 किताबें आज की तारीख में मेरे पास अवेलेबल है। तो ये इतना सा बॉक्स, इतनी सी पेटी, 75,000 किताबें, एक बिल्डिंग अगर बनाऊं तो 5-6 मंजिला बिल्डिंग लगेगी, मगर सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल है, सभी के साथ तुरंत शेयर कर सकते हैं। ये सभी के लिए है। ये हमारे यहाँ मराठी में एक बहुत अच्छा सुंदर संत वचन है कि ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी सबको गले से लगाते चलो। ये दीन दुखी माने हम जो पढ़ाई अध्ययन करना है, जिनके पास मटेरियल नहीं है, मटेरियल चाहिए, लेट अस शेयर, इट्स नॉट माय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये कोई मेरी बाप दादाओं ने निर्माण की हुई दौलत नहीं है, ये स्कॉलर्स ने और सभी ने सभी के लिए बनाई हुई ये बौद्धिक संपदा है। So this is an heritage we need to share with each other. So once again, thank you, thanks a lot to all of you, and now we'll stop here. आप भी कुछ शेयर करना चाहते हैं, then always most welcome. थैंक यू सर, आपने बोल के मुझे बहुत अच्छा किया कि मुझे बहुत बुकों की आवश्यकता थी। अब मुझे पता चल गया कि आपके पास बुक अवेलेबल है, तो मैं आपको आपसे लेते रहूंगा बुक। Yes, most welcome जी। यहाँ क्योंकि पे क्या है भी सर, कैसे मैं एक आर्कोलॉजी के स्टूडेंट हूँ सर, और मैंने आर्कोलॉजी में इतना नहीं पढ़ा जितना आपसे सीखा मैंने। यहाँ जितने भी स्टूडेंट है या जो भी रिसर्चर्स है, प्रोफेसर्स है, अगर आपके किसी स्टूडेंट का पीएचडी का कोई रिसर्च चल रहा है, उससे रिलेटेड कोई मटेरियल अवेलेबल है क्या, तब भी आप बोल सकते हैं। मैंने जैसे कहा कि ये हमारी भारतीय धरोहर है और ये सबके लिए है। इट्स नॉट माय ओन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, नो नथिंग एल्स, ये सबका है, सबके लिए है। So thank you once again. थैंक यू सर। So from tomorrow there will be no session, but please share your notes. Yes, okay. Thank you. Good night. थैंक यू थैंक सर। यू। थैंक यू। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.